करना ये था कि मुझे सिर्फ पाइथन का प्रॉक्सी सर्वर बनाना था. Okay. मैंने किया, ये प्रॉक्सी सर्वर तो बन जाएगा, उसका यूआई बनाते हैं रिएक्ट. Oh, rejected you. That feels like, yeah, this person doesn't think about me as much as I think about them, and that feels disheartening. It's not hate, it's not disliking, it's कि यार I just wish I had their attention and their time. I want to help improve the literacy of the world. I want to make people find it easier to learn about something. I want to do that, and that would be my legacy. Assalamualaikum everyone, and welcome to another episode of Elastic Connection. And today we have Saif al-Islam with us. Assalamualaikum Saif. Hello, Islam. How are you? Alhamdulillah, I'm very good. How are you, Saif? I'm excited to be here actually. दिख रहा है, पता चल excitement दिख रही है. You're very excited for someone who's here at the podcast. Like you're the one who's showing the most excitement to be sitting there. I love talking to people. I love sitting down with people. One to one मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है लोगों के साथ. मुझे 2 घंटा 3 घंटा बैठा दो, मैं बात ही करता हूँ. I'll try to find topics to keep. Like I would have loved to do that, but unfortunately, I said, well, we don't have the capacity to do that long recording today. Yeah. But like it's a good start to the podcast. And Saif, as a graduate, fast graduate in in computer science, how has been your experience till now? And university कैसी थी, life कैसी थी, सब कुछ. Let's start with your journey. आपस like that's what we do for everyone. Sorry. University level पे या after graduation? जहाँ से आपको अच्छा लगे कि there's something to like worth telling people. Yeah. So I started. I'm basically, people who don't know me, मैंने join किया था fast in 2018. I graduated in 2022 के अंदर. I majored in computer science. Allah shukar, अच्छी GPA 3.66. That's a very good GPA for a first year, right? And 4 साल मेरे काफ़ी ups and downs के रहे. In my opinion, I don't know कि शायद बाहर लोगों को नज़र आए कि I'm doing always well, but that's not true. और I had a lot of experiences में बहुत ज़्यादा learn करने के वाला during university, after university, personal lives में, university life में, academic life, professional life में, and looking back, I'm just very thankful कि जो चीज़ें मुझे मुश्किल लग रही थी initially, या फिर जो challenges मुझे obstacles life में लग रहे थे, and looking back, I realized that those shaped me in a way. If I had not faced those problems, मैं शायद आज वो ना बनता जो कि मैं आज करती हूँ. So like in some capacity, I'm thankful to all the issues that I faced. क्या issues ऐसे face हुए थे जो आपको लगता है कि यार ये नहीं होते तो आज नहीं होता? यार in a personal life, families में थोड़े से मसले चलते रहते हैं. I have a big family right now, and जब conflicts होते हैं families में तो थोड़ा सा emotional उसमें side में बहुत involved होते हो, जो कि आप हर किसी को नहीं share कर सकते. Yeah, definitely. दिल में होती बातें but आप publicly उनको share नहीं कर सकते. Second thing was that कि पाकिस्तान में रहते हुए जब आपके पास सिर्फ आपकी मदर हो और कोई भी ना हो, और आपको पूरा घर की चीज़ें काम करना हो, आपको ग्रोसरी से, गाड़ी से, बिल से सब कुछ मेंटेन करना हो, ये सब चीज़ें करनी हो, दैट गिव्स यू एक इम्प्रेशन. ये ग्रोइंग अप, आप एडल्ट बन रहे हो, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना सीखना चाहिए आहिस्ता आहिस्ता. एंड आप मिस्टेक करने वाले हो, जितना आपको लगता है जितना ज़्यादा मिस्टेक्स नहीं करोगे उतना ज़्यादा मिस्टेक आप करते हो. लाइक अगर आपको लगता है ज़िंदगी में कि यार मैं तो अच्छा इंसान हूँ, मुझसे गलती नहीं हो सकती, यार मैं तो बेस्ट हूँ, मैं सब अच्छा इंसान मैं जानती नहीं हूँ, बट ऐसा नहीं होने ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होने वाला ज़िंदगी के अंदर ऑब्वियसली. बट वो चीज़ रियलाइज़ करने में एहसास होता है. एंड देन आफ्टरवर्ड्स प्रोफेशनल लाइफ में आपको वो काम नहीं मिलना जो कि आप चाहते हो, या फिर आपकी एक्सपेक्टेशन से कभी कभी चीज़ें मीट ना होना, या फिर आपको अपना खुद जगह ढूंढना, फिटिंग करवाना आपको गिवन सर्कमस्टेंसेस के लिहाज से. दैट वाज डिफ़िकल्ट. एजुकेशन के लिहाज से नॉट हैविंग अ प्रॉपर कैरियर पाथ कि आपको क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं, और जो सेल्फ टॉक बीच में आता है कि यार वो तो ये कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर रहा. Essentially in that. It was a long way. और क्या से शुरू करूँ मैं. So I started in 2018, and in 2018 what happened was that I remember the date I came to fast. The first day of fast was on 27 August 2018, and it was and what happened that month was that same month में मेरे father pass away किए थे. He passed away due to cancer. But he knew I was going to fast before he passed away, so he was very happy. उनका attitude हमेशा मेरे साथ ये था कि Saif कर लेगा, Saif smart, he can figure it out. No one needs to tell him that much. और मैं फैमिली में ये ट्रेंड चलता रहता है कि eventually हम सब जो फैमिली में सब है, कोई हमें फोर्स नहीं हुआ कि अच्छा तुम ये करो तुम वो करो. people are shocked कि अच्छा तुम्हारे फैमिली में इतना सारे कंप्यूटर साइंस वाले ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं. Yeah, your elder brothers are computer scientists too, right? 3 भाई के पास से. Nice, yeah. Okay. और
उनका ये था कि अच्छा यू मस्ट हैव कि अच्छा ये करना है वो नहीं करना, बट इन आवर कल्चर जैसा फैमिली में हुआ है, एवरीवन नीड्स टू फाइंड देयर ओन वे एंड टू फिगर दोस थिंग्स आउट। तो जब मैं यूनिवर्सिटी में एंटर हुआ, मेरा एम ये था कि बिकॉज ऑफ व्हाट हैपन इन दैट अगस्त, आई वाज वेरी इमोशनल स्टार्टिंग से ही कि यार आई डू समथिंग बिग, मुझे कुछ बड़ा करना है, आई डोंट नो क्या करना है बट मुझे कुछ बड़ा करना है। तो जब मैं यूनिवर्सिटी में एंटर हुआ, मेरा फोकस ये था कि आई नीड टू बी लर्निंग कंटिन्यूसली, मुझे चीज़ें फॉर सीखनी, मुझे वो करना जो कि सब नहीं कर रहे हैं। So I decided to go and be different from what everyone else is doing. Like मेरे पर्सनल फैक्टर बहुत ज़्यादा ये है कि I need to be different from everyone else. Yeah. If I don't, मैं शायद स्टैंड आउट ना करूँ और मैं शायद ज़्यादा maybe लोग नोटिस ना करें मुझे, या फिर मेरा काम ज़्यादा नोटिसबल ना हो, मुझे उससे फाइट अगेंस्ट करना है in some capacity. सही। And what happened was कि मैंने चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता शुरू की। I remember कि जब मेरा फर्स्ट सेमेस्टर एंड हुआ था, तो मेरा था कि नहीं, मैं विंटर ब्रेक है मगर मैं घर पे आराम नहीं करूँगा। मैंने किया ये कि फाइनल लैब हुई, मैं अपने लैब इंस्ट्रक्टर के पास गया एंड आई गॉट अ बुक फ्रॉम द लैब, सॉरी लाइब्रेरी से, एंड इट वाज अ बुक अबाउट कंपाइलर्स एंड आई सेड कि यार मैं कंपाइलर सीखना है। क्यों सीखना नहीं पता, हम सीखते हैं, रिकर्शन होती है उसके अंदर। सही है। तो आई वेंट टू माय लैब इंस्ट्रक्टर एंड आई आस्क्ड हर फॉर हेल्प एंड शी सेड कि ये है। फिर मैंने बोला कि नहीं, अच्छा एक काम करता हूँ मैं कि हर रोज़ ना बुक पढ़ने के लिए मैं फास्ट आऊँगा विंटर ब्रेक में भी। तो मैं सुबह उठता था, अच्छा मैं पूछती थी कि छुट्टी में कहाँ जा रही, छुट्टी भी चल रही है, और आप बता दें कि मैं तो फास्ट जा रहा हूँ पढ़ने। मैं तो फास्ट जा रहा हूँ। और उस वक्त अच्छा होता है ना कि कई का कोच रिपीटर्स वगैरह जा रहे होते हैं, छोटी सी कोच होती है, जगह ही नहीं होती खड़ी होने की। तो मैं कहीं स्टेशन हुई नहीं थी मैं बस आ जाता था सुबह बस में, और दैट्स हाउ आई स्पेंड 2 and 3 weeks इन फास्ट विंटर ब्रेक के अंदर। कंपाइलर की बुक पढ़ रहा था, पाइथन खुद सीख रहा था, कोर्स उठा रहा था, पाइथन की बुक ले रहा था लाइब्रेरी से, ये सब चीज़ें करता, उससे मसरूफ़ था। मुझे था कि यार बस डेवलपमेंट बहुत अच्छी करनी है मुझे, आई डोंट नो कि एग्जैक्टली क्या बनना है। मैंने कई लोग सोचा, मैंने फाइनेंशियल क्वेश्चन सोचा, मुझे बस अच्छा डेवलपर बनना है। ओके, कम्स अराउंड सेकंड सेमेस्टर मैंने किया ये डिसाइड किया, अच्छा मैंने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर स्नेक गेम बनाया था। अब मैं करूँ प्रोजेक्ट, हाँ, अब मैं करूँगा ये सेकंड सेमेस्टर की, मैं 3D गेम बनाऊँगा और वो भी C++ के अंदर एटीट्यूड को सैल्यूट है। फिर मैंने डिसाइड किया नहीं, मैं अपना ग्राफिक इंजन लिखूंगा, क्योंकि रेंडर कैसे करते हैं, ये यूनिटी कैसे बनते हैं। तो मैंने ट्यूटोरियल ऑनलाइन ढूंढा, मैंने 2-3 गेम बनाए, मैंने ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग के कोर्स में ये डाला, जबकि बाकी लोग मैंने सिस्टम बनाए थे। बोला नहीं, मैं सबकी तरह नहीं बनना चाहता। तो ये सब करते करते आई ट्राइड डिफरेंट थिंग्स। मैंने सेम सेमेस्टर DLD के अंदर ये किया कि देयर्स इफ पीपल इंटरेस्टेड इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस, बैन ईटर एक हैं ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर इन अ वे, मतलब टेक्नीशियन है बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। उन्होंने एक ट्यूटोरियल बनाया कि आप ब्रेड बोर्ड इस्तेमाल करके, सर्किट इस्तेमाल करके, चिप इस्तेमाल करके कैसे 8 बिट का CPU बना सकते हो। ओके, मैंने DLD की टीम में अपने 4 लोग लिए इंक्लूडिंग मी। हम लोगों ने पैसे मिलाए 7,000 रुपये पर पर्सन 7,000 नहीं, पूरी टीम। ओके। फिर मैंने जाके सामान लिया ससाई यूनिवर्सिटी के पास से इलेक्ट्रिकल से, और मैंने ब्रेडबोर्ड पूरा बनाया। खैर चला नहीं, अभी तक घर पे रखा हुआ वाला प्रोजेक्ट, इसको दिया नहीं मैं। आप CPU बना रहे थे? हाँ, CPU बना नहीं। और बाद में पता चला कि तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में करते हैं जो कि हम कर रहे थे सेकंड सेमेस्टर में, राइट? और मेरी इलेक्ट्रिकल हुई नहीं। यस, बट दैट वाज द होल थिंग कि यार आई वांट टू बी डिफरेंट, आई वांट टू ट्राई आउट डिफरेंट थिंग्स। तो आई वांट टू गो ऑन अ डिफरेंट पाथ उस जर्नी में। एंड इस पूरे प्रोसेस में थोड़ा सा मुझे अजीब से इस बात पे लगा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन ट्राइंग न्यू डिफरेंट थिंग्स, इट्स हार्ड टू मेक पीपल अंडरस्टैंड कि आप क्यों कर रहे हो ये सब, लाइक व्हाट्स द गोल, तुम्हारी मोटिवेशन क्या है। बिकॉज a lot of people just aren't just interested in making random complex things just for fun. That's not how you find people like that. And उसमें ये कि you start thinking to yourself, भैया बाकी सब तो वो कर रहे हैं, इंडिया से सक्सेसफुल, क्या मैं बहुत ज़्यादा ओवरकिल कर रहा हूँ अपने पास, क्या मैं बहुत ज़्यादा बर्नआउट कर रहा हूँ बिला वजह अपने आप को, बिला वजह एफर्ट लगा रहा हूँ अपनी, आई डोंट नो। सो टर्न्स अराउंड के अच्छा मैंने डिसाइड किया थोड़ा सा कि सेकंड सेमेस्टर के ना थोड़ा सा आहिस्ता लेके चीज़ें चलूँगा। और उस वक्त 16K काफ़ी इन्वॉल्व होते थे 18K वाले स्टूडेंट के साथ। एंड उस वक्त मुझे बहराम भाई मिले, संजय भाई मिले, सतीश भाई मिले, एंड उन लोग डेटा साइंस कर रहे थे। एंड मुझे पता नहीं डेटा साइंस एग्जैक्टली ही क्या, बट मुझे नज़र आया कि मैथमेटिक्स है, कैलकुलेशंस हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स फंक्शंस हैं, ग्राफ नज़र आ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तब तुमने बोला अब ये सीखना है। हाँ, अब ये सीखते हैं। तो एक मैं फर्स्ट सेमेस्टर में था स्नेक गेम, फिर मैं आया ग्राफिक्स इंजन पे, फिर मैं उसको डेटा साइंस पे चला गया।
I was trying out different things. मुझे था कि You were way ahead of your time for a third semester student. wait, अभी थर्ड सेमेस्टर, हाँ अभी थर्ड सेमेस्टर पे Data science में ना? या एंड मुझे उस वक्त समझ में नहीं आ रहा था कि यार अगेन आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि क्या डेटा साइंस अभी करना चाहिए, क्या मैं बहुत ज़्यादा तेज़ जा रहा हूँ, एम आई गोइंग टू स्लो, एम आई गोइंग टू फास्ट, आई डोंट नो लाइक. सो मैंने आई मीन इन द एंड अभी थोड़ा सेमेस्टर को अवॉइड करता हूँ, बट लाइक मुझे एहसास हुआ टूवर्ड्स माई ग्रेजुएशन वाज दैट कि इट्स नॉट टेक दैट रियली इंटरेस्ट मी. मुझे टेक्नोलॉजी से मैं कुछ भी उठा लूँगा, मैं कुछ भी अच्छा कर लूँगा, मुझे पता है मैंने कैपेसिटी है. आई विल पिक अप एनीथिंग एंड आई डू वेल इन इट. मुझे कुछ शक नहीं है इस चीज़. Okay. But I realized that on a personality psychological level, I started to read a lot about psychology after graduation to understand different aspects, because I have my own aims to have my own company one day, to do that, to lead people, and मुझे सब चीज़ें करने का शौक है बहुत ज़्यादा, right? And because of that, मुझे एहसास हुआ कि whatever I do needs to have a meaning, in that it should contribute something positive to people around me. अगर मैं बिला वजह प्रॉब्लम सॉल्व किए जा रहा हूँ, मगर मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा कि कोई इसका फ़ायदा उठा सकता है, मुझे इसमें वैल्यू नज़र नहीं आती. लाइक आई कैन नॉट कीप गोइंग ऑन मेकिंग कॉम्प्लेक्स लीड कोड सॉल्यूशंस, बिकॉज टू मी stuff like that just doesn't really have a lot of social value in my... yes, you can obviously, it's great for interviews and stuff like that, but like if you think about it long term, impact नहीं हो रहा, create हो रहा था उससे, right? yeah, and that kind of bothered me was कि मैं I could solve 900 lead code questions, no problem, but like, do I want to? Will I have fun in it? सब करने के बाद मुझे क्या मिलेगा? एक इंटरव्यू क्लियर करवा दूंगा बस. That's the outcome. And मैंने एहसास हुआ, getting into data science, I did data science in third semester. अच्छा, उस वक्त मुझे मैं मिला था अहमद से, मोहम्मद अहमद. he's a great data scientist, मेरे बैच से. I started to meet different people. अच्छा, मैंने सेकेंड सेमेस्टर आखिर में एक चीज़ की थी, अभी तक वो चीज़ एक्टिव है. सो आई एम पीपल्स पर्सन. मुझे लोगों के साथ मिलना जुलना, लोगों से कांटेक्ट बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है. सेकेंड सेमेस्टर के आखिर तक एहसास हो रहा है कि यार आई एम नॉट द ओनली पर्सन जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है. बाकी लोग बहुत ज़्यादा टेक्निकल एडवांस हैं. ताशिक हो गया, हसान हो गया, अरीब हो गया, ये सब लोग. तो एक काम करता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप बनाता हूँ, इनवाइट कर सबको ऐड करवा देता हूँ. सब चीज़ें डिफरेंट सेक्शन से एक ही बैच की, एक ही जगह पे. कोई सवाल अगर पूछना हो, कोई सेमेस्टर का कुछ पूछना हो, सब एक जगह पे हो. हमारा प्राइवेट पर्सनल मतलब यूनिवर्सिटी लेवल ग्रुप, सोसाइटी से बाहर, जिसको जो जनरल आवाम बोलेगी कि ये नर्ड ग्रुप ये रहा, ये नर्ड्स का ये रहा, ये पढ़ाई का सिर्फ ये है, राइट? हाँ. सो लाइक एक इंटरनल ग्रुप तक कुछ भी टेक्निकल पूछना हो यहाँ पोस्ट कर दो, या आपको असाइनमेंट डिस्कस करना तो भी आ जाओ, कि भी आ जाओ. a safe space for you guys, right? Yes. और फिर what happened was कि it become a way for section to section change करने की. किसी ने सोल्यूशन शेयर किया, नेट ग्रुप को सोल्यूशन कहीं और पहुंच गया, वापस हमारे पास ही होके आ रहे हैं सब. Yeah. So that happened. And अच्छा, थर्ड सेमेस्टर के अंदर what I did was that कि people were pushing कि अच्छा तुम स्पीड प्रोग्राम करनी चाहिए, तुम्हें ये सब करना चाहिए, और because उसकी वैल्यू है, people look up to स्पीड प्रोग्रामर्स वगैरह के तौर पे. So I went in third semester to Ghulam Ahmad Khan University for ICPC and TOPI, and I went with Amar Kumar, I went with Soban, Saad Ismail, और ये सब के साथ and Ahmed और मेहरान कमाल मेरे साथ थे. and मेरी टीम की 7th पोजीशन आई, उन लोगों की फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन वो चीज़ थी. एंड मैंने मेडल पोस्ट किया था उसके, एंड पीपल केम टू मी, यार तुम लोगों ने ये सब किया है वगैरह किया है. एंड दैट वाज लाइक अ वे कि मुझे एहसास हो कि स्पीड प्रोग्रामिंग इज़ अ वेरी वैल्यूएबल थिंग जो कि शुड बी थॉट. एंड उस समय में अपना एहसास हुआ कि यार आई डूइंग स्पीड प्रोग्रामिंग इज़ वन थिंग, teaching people to learn about speed programming is a different thing, mentoring and all of that kind of stuff, कि यार कैसे चीज़ें सॉल्व करनी होती हैं, क्या अप्रोचेस होते हैं. लोगों को सिखाना इज़ वेरी फन. लोगों को नई चीज़ें दिखाना इज़ ऑल्सो वेरी फन. अगर अपने मुझे एहसास हो कि अगर आप अपने आप को महदूद करके रखते हो सिर्फ अपने आप पर, आई दैट फील्स लोनली इन सम कैपेसिटी. मगर जब आप उसको शेयर करना शुरू करते कि ये भी तो है, वो भी तो है, ये भी तो है, ये सब तो देखो, और मतलब मैं बहुत ज़्यादा trying to inspire a lot of people. That's what I wanted. So third semester came around, मैंने उसमें किया ये कि I went to Geeky से वापस आया. उसके बाद फिर मैंने कुछ projects data structures वगैरह थे. Okay. खैर, sorry, continue. So third semester comes around, और अच्छा third semester के around मुझे there were a few things going on in family. Okay. The left मतलब थोड़ा सा मैं
डिकम्प्रेस होने की कोशिश कर रहा था गिवन सम इवेंट्स इन द फैमिली, और उस वजह से मैं जब विंटर ब्रेक आई तो उसमें मैं बहुत ज़्यादा स्लो फील कर रहा था। मैं चीज़ें सीख रहा था इधर और उधर, बट मैंने कोई गोल नहीं था। मतलब एट दिस वाज द पॉइंट कि मुझे एहसास हुआ कि आई नीड टू हैव अ गोल, आई नीड टू हैव अ पाथ। अगर पाथ नहीं है मेरे पास तो आई कैन नॉट फिगर आउट। एनर्जी ड्रेन हो गई थी अब तक? आई बीन बर्न आउट थ्रू अ लॉट ऑफ टाइम्स, 3-4 दफ़ा तो हो चुका हूँ मैं। जितनी स्पीड से चले थे तो बर्नआउट तो बनता था, राइट? या फिर आई फील कि बर्नआउट जो हो जाता है उसके बाद व्हेन यू पिक योरसेल्फ अप तो अब और अच्छे से ग्रो करते हो, अब और अच्छा बूम आता है। बट इफ़ यू पिक योरसेल्फ अप आफ्टर द बर्नआउट, इट्स लाइक गोइंग टू द जिम। आपने 1-2 घंटे के लिए बहुत आर्ड्यूअस, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट एक्सरसाइजेस की, एंड साइंस सेज कि जब तक आप उसके बाद रिलैक्स नहीं करोगे, आराम नहीं दोगे अपना, जब तक आपकी मसल्स ग्रो नहीं होंगी। या द राइट रिकवरी टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, रिकवरी टाइम भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके बाद। 4th सेमेस्टर आता है, कोविड आ जाता है अचानक से, और 3.5 मंथ का सेमेस्टर बन जाता है 6 महीने का। और उस समय सोच, अच्छा, कोविड वाज अ वेरी डिफरेंट टाइम, बिकॉज एक बात तो ये थी कि आप घर पे होते हो और वो डिफरेंट लाइफस्टाइल बनता है कि सुबह आपको नहीं उठना है हर रोज़, सुबह पॉइंट में नहीं जाना है, एग्जैक्टली। पॉइंट से वापस आने का नहीं सोचते हैं, खाना घर पे मिल जाएगा, लंच पे बाहर बिरयानी नहीं खानी है आपको। वो भी कैफे की वो भी कैफे की नहीं खानी है। दैट वाज द इनसाइड जोक, पता नहीं किसी को समझ आई नहीं, बट सही है। फास्ट को समझ में आ जाएगा। या और 4th सेमेस्टर के दौरान वाज अ गुड टाइम इन माई सेंस, क्योंकि मुझे वक्त मिला टू थिंक अबाउट अ फ्यू थिंग्स के गोइंग फॉरवर्ड क्या करना है। ऑब्वियसली आई वाज डूइंग द प्रोजेक्ट्स, मैं असाइनमेंट्स वगैरह कर रहा था, एंड इट वाज अ गुड टाइम इन द सेंस के इट गेव मी टाइम टू एक्सप्लोर फाइनली कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ। सो आई टुक माई इंस्पिरेशन, और एंड एट दिस पॉइंट आई वाज सीरियसली कंसिडरिंग हाउ टू बिल्ड अ प्रॉपर कैरियर के तौर पे। इधर उधर प्रोजेक्ट करना एक पॉइंट तक अच्छा है, बट लाइक आई वांट समथिंग सीरियस ताकि मैं उसमें लगा रहूँ। सो 4th सेमेस्टर कम्स अराउंड, आई थिंक आई गो अहेड एंड मेक अ प्रॉपर लिंक्डइन बनाया मैंने, प्रॉपर गिटहब पे करना शुरू किया। गिटहब में कर रहा था पहले भी, बट आई थॉट कि आई शुड बी मोर सीरियस अबाउट इट, आई पुश मोर अबाउट इट। और दिस वाज द ईयर कि मैं 1000 कमेंट्स पुश कर दिए थे उसी ईयर, सेम ईयर। सही है। तो मैं लिंक्डइन पे एक दिन गुजर रहा था, एंड मुझे सो वन थिंग इज़ दैट कि जो हम सॉफ्टवेयर वगैरह बनाते हैं, जो लिखते हैं, द थिंग अबाउट दैट इज़ दैट कि अगर मैं प्रोजेक्ट हद तक उसको रखता हूँ या फिर अपने पास ही रखता हूँ उस चीज़ को, उसकी सर्टेन वैल्यू होती है सेमेस्टर के एंड होने। सेमेस्टर हुआ, इवैल्यूएशन हो गई, टाटा अल्लाह हाफिज़, ज़िप फाइल में कहीं पड़ा हुआ ज़ीरो। वैल्यू ज़ीरो, ज़िप फाइल में कहीं पड़ा हुआ था, पता नहीं कहाँ गया। मेरे सारे प्रोजेक्ट गुम चुके हैं। मैंने गिटहब पे नहीं सेव किए, जो अब फील होता है करने चाहिए थे। दिखाने लायक अच्छा लगता है यार। Exactly. मैंने ये भी किया था, तुमने क्या किया? एक ब्रैगिंग पॉइंट्स मिलते हैं ना आपको सर्टेन चीज़ के। वो तब मिलता है जब आपका प्रोजेक्ट ब्रैगिंग के काबिल हो। नहीं, सो आई डिसएग्री देयर। सो वन थिंग इज़ दैट कि मुझे ऐसे एहसास होता है लाइफ के अंदर दैट वी आर टू हार्श ऑन आवरसेल्व्स फॉर नो रीज़न एट ऑल। you don't need to do that. So one thing जो कि मुझे काफ़ी म्यूज़िक टेस्ट मेरे साथ चेंज हुआ है given the years, and music I listen to is called Alexander Hamilton. It's about the first street treasury of the US. Okay. उनकी लाइफ के बारे में, and there's a song in it, it's called that would be enough. So it's basically his wife telling him he comes back after the war. ये सब जंगें हो रही है, Yeah. अमेरिकन रेवोल्यूशन वॉर चल रही थी, वो ब्रिटिश से जान छुड़ाना चाह रहे थे, ये सब हो रहा था। And she says कि if you come back home, if you just live and survive, that would be enough. Like look at where you started, look at how far you've come. Yeah. That would be enough. मतलब इतना कि यार मैंने अच्छा नहीं किया था, मैंने वो नहीं किया था। यार जानी, स्कूल लाइफ कंपेयर करो अपने आप को, and look at where you are now. People Yeah. look up to you for inspiration. लोग आपसे आगे बात करना पूछते हैं, आपके गोल्स हैं, एस्पिरेशंस हैं, ड्रीम्स हैं। तो क्या हुआ अगर 3-4 साल लग गए, 5 साल लग गए, 6 साल लग गए? आपका गोल है, आपकी जर्नी है, परस्यू करते रहो। Yeah, you There's should be some- proud of yourself, right? You should find a ways to make yourself happy and find ways to build yourself up. Because अगर आप अगर दुनिया के हर गम लेना शुरू करेंगे दिल के अंदर, तो इस दुनिया में गम की कोई कमी नहीं है। Yeah. और होता ये है कि शायद कभी आपको फील होता हो कि यार मुझे सर्टेन शख्स के पास जाके अच्छा फील होता है। You want that person in your life that you can go to and you can tell him, her, whatever, about anything that you have in mind. Why not be that person, in life, I think in society, in Pakistan society at least, we think about यार वो मुझे टाइम आपका दे देगा, ये सब हो जाएगा। I don't know how this person gives me the 1 hour, 2 hours per day, whatever it is, to
help me solve my problems. And looking back at that, I think we think about taking something from people, you know, and maybe we don't think too much about giving to people. Khalil Gibran, उनकी एक, I don't know कि I know ये philosophy बहुत ज़्यादा mention करने वाला हूँ. It's very okay. Like, it's very good. आप इसकी बात है. Yeah, I love philosophy, I love psychology, history, political science, ऐसा humanities का मैं शौक है. So Khalil Gibran says one thing, and that's about कि यार हर इंसान का दिल ना is like a cup of tea. आप दूसरे के कप से ले सकते हो, मगर जितना आप लेते रहोगे वो इवेंचुअली उसका दिल खाली होता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता. एंड करना आप हमेशा ले भी सकते हो, मगर कभी आप खुद भी देना सीखो, क्योंकि जब आपसे कोई मांगता है कि मुझे दो, आप दे तो देते हो, पर आपको याद रहता है कि यार मैंने दिया अपने आप को किसी को. और जब आप वापस नहीं देते हो, दैट फील्स लाइक कि यार दिस पर्सन डजंट थिंक अबाउट मी एज मच एज आई थिंक अबाउट दैम, एंड दैट फील्स disheartening. It's not hate, it's not disliking, it's कि यार I just wish I had the attention and the time. That's that. खैर हम बात कहाँ से निकले थे, कहाँ चले गए, हम 4th semester पे थे. Yeah. So coming back to 4th semester, मैंने किया ये कि अच्छा I started pursuing LinkedIn more. Yeah. And at that point I started to see a lot of people, and Indians are everywhere, and everything you go and everything you do, जिसमें भी जाएं, हर कैटेगरी में जाएं, हर सेक्शन में जाएं, there's a person Indian over there. Yeah, on the top of the chain, right? Yeah, and I started to see people, Indians में, they started to pursue something called MLH and open source कर लेते हैं, and I was like, what's open source? Like, I don't know anything about open source, closed source, चीज़ क्या है. अच्छा, मैं ये फेज ऑफ लाइफ में था कि मैं विंडोज़ से जान छुड़ाना चाह रहा था, क्योंकि विंडोज़ to me was very slow on a machine. Like, I had a 8 GB RAM ThinkPad, i5 6th generation वाला लैपटॉप, इतना मोटा लैपटॉप था मेरे पास, उसको हाथ में लेके घूमता पता. If you ask my batchmates, you will see कि अच्छा वो तो पूरे दिन लैपटॉप. That was my impression on people sometimes when I first talked to them. So at that point मैं 3rd semester में आया, 4th semester मुझे एहसास हुआ अच्छा ये लिनक्स भी कुछ होता है, एंड वो चीज़ें भी होती हैं. अच्छा लिनक्स से काम करता है, अच्छा माइक्रोसॉफ्ट मेंटेन नहीं करता है इसको, इसकी अपडेट्स किधर से आती हैं. एंड ऐसे ऐसे एहसास हुआ कि people voluntarily spend their time fixing things so people all around the world can use them for free. Yeah, open source जो होता है, right? They're not looking for money. What are they looking for? Why are they doing what they're doing? Yeah. And ऐसा जितना सोचते रहे, so around more than 90% of the world's cloud services runs on Linux. They pay no money to Linux. आपकी कंपनी ओपन सोर्स टूलिंग यूज़ करती है, रिएक्ट यूज़ करती है, whatever. रिएक्ट कोई पैसे देता है कि रिएक्ट इस्तेमाल करने के? मैंने आज तक यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर $0 दिए हैं टू यूज़ एनी सॉफ्टवेयर एट ऑल, टू बिल्ड एनीथिंग. क्यों? क्योंकि देयर वाज अ कम्युनिटी पीपल जो कि टेक्नोलॉजी को ज़्यादा चेंज करना चाहती थी, इम्प्रूव करना चाहती थी, कोई फ्रेमवर्क बना दिया, कोई लाइब्रेरी बना दी, कुछ भी कर दिया. तो मुझे इंटरेस्ट हुआ, अच्छा ये MLH होता है, ये गूगल समर ऑफ कोड होता है, अच्छा ये ऑर्गेनाइजेशंस पैसे देती हैं फ्री ये सब करने के लिए. एंड दैट वाज काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग. आई एम नॉट ऑन दिस मॉनिटरी एस्पेक्ट, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लिंक्डइन पे जाओगे, लिंक्डइन मैंने कुछ अर्से के लिए लाइफ के लिए थोड़ा सा इग्नोर करना शुरू किया. एंड द रीज़न इज़ दैट कि द मोर आई थिंक अबाउट हाउ थिंग्स वर्क इन द वर्ल्ड, the more it seems like everyone is very inauthentic. Okay. It's not genuine in the sense कि कोई ऐसे लिखता नहीं है आर्टिकल, कोई नेचुरली ऐसे बातें करता नहीं है. ये सब phrase टाइप फ्रेम बना हुए हैं on how they want to be looked at, but not how they actually are. Yeah. And that kind of bothers me because मैं inauthenticity को बिल्कुल prefer नहीं करता हूँ. And at that point, so I saw कि यार ये they're working on things, वो open source कर रहे हैं. एंड मैंने अप्लाई करना शुरू किया इन प्रोग्राम्स के दरमियान. और मी 4th सेमेस्टर एम्बिशियस स्टूडेंट फास्ट का पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी से डायरेक्टली ट्रांसफर में अप्लाई कर रहे गूगल के. Like nothing wrong in that ऐसे. एंड उसमें क्वेश्चन मुझे अभी तक याद है, अच्छा आप म्यूजिक कौन सा सुनते हैं? Okay. Why do you want to know that? I realized later that was a true off question because अगर आप गूगल समर ऑफ कोड में जाने हैं, आपको 1-2 महीने पहले मेंटेनर से बात करनी पड़ती है. डायरेक्टली एप्लीकेशन बेच के एक्सेप्ट नहीं होते हो. That's not how it works. So it takes a lot of time to make a commitment to that kind of process. I didn't know. मैंने बोला कि कर देता हूँ, अप्लाई करता हूँ, हो जाएगा. नहीं हुआ. साइड ट्रैक. खैर है, कोई बात नहीं. और अच्छा, so data science, okay, back to data science because data science पहले मैंने था. data science मैंने
ये था कि अच्छा मैं सर्टिफिकेशंस कर लेता ताकि एटलीस्ट मैं इंटर्नशिप वगैरह ढूंढना शुरू कर दूँ. आई मीन आई कैन डू कैगल एंड स्टफ लाइक दैट, बट आई डोंट नो कि कंपनीज सर्च प्रेफर करेंगी या कैगल प्रेफर करेंगी. I don't know what to prefer right now. So I said कि safer option. Also, I was not a very restricting person. I wanted to be played very safe right now. Yeah. And I decided to go for an approach where I wanted to do certifications more. तो मैंने 2-2.5 महीने जो रह गए थे आखिर में बिफोर 5th सेमेस्टर के स्टार्ट होने में, मैंने कितनी सर्टिफिकेशंस निकाली हैं मैंने? 6-7 निकाल दी होंगी. स्टैनफोर्ड का भी कर लिया, डीप लर्निंग का भी कर लिया, गूगल क्लाउड का भी कर लिया मैंने. एंड एक हफ्ते पहले बिफोर द सेमेस्टर वाज स्टार्टिंग फॉर द 5th, उसमें मुझे था कि अच्छा सेमेस्टर आ रहा है, आई नीड टू मेक अ प्रॉपर थिंग ताकि मैं प्रोफाइल पे कुछ ला सकूँ. आई डोंट हैव दैट मैनी थिंग्स ऑन प्रोफाइल राइट नाउ, आई नीड टू इम्प्रूव समथिंग. सो मैंने किया ये कि आई वेंट एंड आई डिसाइडेड टू लुक डेटाबेसेस के तौर पर, वांट टू लर्न डेटाबेसेस स्पेसिफिकली बिकॉज नेक्स्ट सेमेस्टर में डेटाबेसेस हैं, एसडी आने वाले 5th सेमेस्टर में. सो उस पॉइंट पे मैंने, बिकॉज मैं अंदर वही कीड़ा है कि अलग करना सब कुछ कि करना है, तो मैंने कुछ मिला मुझे कि एक ग्राफ डेटाबेसेस कुछ नाम की चीज़ होती है. Okay. जिसमें हर इन्फॉर्मेशन नोड होता है, वो नोड आपस में लिंक होते हैं, समाउ कनेक्शंस बनते हैं, एनालिसिस अच्छा होता है उसके अंदर. और उसमें एक दिस वाज आई थिंक Neo4j. इट्स अ ग्राफ डेटाबेस जिसमें हाउ द रिलेशनशिप्स मैनेज एंड स्टफ लाइक दैट. Neo4j बैकएंड पे MongoDB यूज़ करते हैं. Okay. और मोंगो आती नहीं थी उस टाइम. नहीं मोंगो आती थी, हाँ. मगर यू नो इट्स लाइक कि अच्छा हम कुछ नॉवल, मतलब आपको लगता है कि बहुत हर चीज़ नॉवल है, नहीं, वो हर चीज़ की किसी के पीछे उसका खड़ा हुआ है. MongoDB उसके पीछे कुछ और खड़ा हुआ है. हर चीज़ का कोई ना बेसिस है, स्ट्रक्चर बना हुआ है. एंड फिर हुआ ये कि दिस वाज लास्ट वीक, मतलब समर एंड होने में लास्ट वीक था. 5th सेमेस्टर स्टार्ट हुआ. 5th सेमेस्टर मुझे मिस अनम कुरैशी मिली. मैंने फर्स्ट वीक में जाके मिस अनम कुरैशी को, अच्छा मैंने उस वक्त इतना पैशनेट था प्रोजेक्ट बनाने के बारे में कि मैंने उस लास्ट वीक समर के एक HTML वर्किंग डेमो बना दी कि मैं कैसे वेबसाइट बनाना चाहता हूँ डेटाबेस कनेक्शन के साथ. Okay. और मैंने जाके मिस अनम कुरैशी को एक क्लास के बाद थोड़ा सा टाइम निकाला उनके साथ. फिर मैंने उनको दिखाया क्या बनाना चाहता हूँ. शी सेड कि यार तुम जाके ना हसन ताशिक, यू नो शी वाज आल्सो टीचिंग सेक्शन H, आई वाज इन D, एंड शी सेड कि यार तुम उनके साथ कोलैबोरेशन कर सकते हो. वी आर इन द सेम, मतलब दे आर इन द सेम इंस्ट्रक्टर. शी वाज टीचिंग मी, शी वाज टीचिंग हर. आई डिडंट नो दैट कुड हैपन. लेकिन वो उन्होंने आपको परमिशन दी कि उनके साथ कर लो. हाँ. उन्होंने खुद सजेस्ट किया. हाँ. एंड फिर मैंने कॉल की, फिर उनके मिलने के बाद शी लेफ्ट द क्लासरूम. आई कॉल्ड हसन. हसन किधर हो? अच्छा वो कैफ़े में था. और मैंने कहा यार मिलना है, ताशिक को साथ ले आना. तो हम साथ मिले. मैंने प्रपोज किया कि मैं क्या बनाना चाहता हूँ, क्यों बनाना चाहता हूँ. दैट वाज एन अमेजिंग राइड क्योंकि 5th सेमेस्टर में ऑन ऑफ चल रहा था कोविड वाली चीज़, एंड मोस्टली घर पे थे हम. Yes. विच मीन्स के क्लासेस बैकग्राउंड में चल रही होती थी, मैं सुनने रहता था मोस्ट ऑफ द टाइम. और मैंने किया ये कि हमने किसी को ना ही एक्सप्रेस या आती थी, वेक्जिस नहीं आती थी, MS SQL सीख रहे थे पहली दफ़ा, डॉकर नहीं आती थी, हमें इंजनेक्स नहीं आता था. हमने बस बोला कि ये चीज़ें इस्तेमाल करके देखते हैं. इवेंचुअली हमने सोशल मीडिया एप्लीकेशन बनाई. उसके अंदर पोस्ट वगैरह हो सकता है, प्रोफाइल होती हैं, फॉलोअर होते हैं, फॉलोइंग होते हैं, शेयरिंग कर सकते हैं, हैशटैग हो सकते हैं, लाइक्स हो सकते हैं, ये नोटिफिकेशन. 5th सेमेस्टर का प्रोजेक्ट था. सेमेस्टर का प्रोजेक्ट. Okay. एंड दैट्स व्हाट हैपेंड. एंड मुझे मज़ा आया काफ़ी, यू नो इट वाज अ वेरी डिफरेंट चेंज ऑफ एक्सपीरियंस एंड बनाने के तौर पे. एंड हमने काफ़ी अच्छा डिलीवर किया. आई हैड अ फन टाइम इन 5th सेमेस्टर. एंड उससे हुआ ये कि मैंने वो 5th सेमेस्टर का प्रोजेक्ट हाफ वे थ्रू, अच्छा MLH में मैं थोड़ा सा 2 इंटरव्यूज़ होते हैं. MLH का एक इंटरव्यू क्लियर करवा दिया था मैंने. द फर्स्ट इंटरव्यू इज़ बिहेवियरल. वो बिहेवियर पहले रखते हैं, टेक्निकल बाद में रखते हैं. टेक्निकल करना ये होता है कि दे डोंट आस्क यू फॉर कोडिंग, दे आस्क यू टू शो अ प्रोजेक्ट जिसमें आपने काम किया है या हैकाथॉन का प्रोजेक्ट बनाया है. तो मैंने वही प्रोजेक्ट दिखा दिया. Okay. मैंने दिखाया, देखिए इतने सारे इश्यूज बनाए मैंने, इतने सारे PR बनाए मैंने, इतने सारे कुछ चीज़ें की है मैंने. एंड दे वर लाइक तुम डॉकर भी यूज़ कर रहे हो, तुम ये भी कर रहे हो, तुम React.js भी कर रहे हो. लाइक हाँ करता रहे. Yeah. तो आई गॉट एक्सेप्टेड. और फिर अच्छा दिस वाज अ लॉन्ग प्रोसेस क्योंकि मैं नवंबर में इंटरव्यूज़ दिया, डिफ़र हुई है. सो बेसिकली दे हैव बैचेस एंड समर स्प्रिंग ये सब के तौर पे. और मुझे पता चला अराउंड रमज़ान के वक्त that they accepted me. This was like after like before 6th semester was just ending. और फिर जब मैं उठा रोज़ा रखने के लिए तो ये ईमेल देखी, फिर मेरे को बताया, फिर हसन को बताया ये सीन हुआ है.
सिक्स सेमेस्टर वाज आई वुड से अच्छा 6 सेमेस्टर के अंदर मैंने बस ये करने की कोशिश की, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट बनाए मैंने। ऐसी का प्रोजेक्ट मैंने 1 हफ्ते के अंदर लगातार कंटिन्यू पूरा किया। मैंने TW के अंदर पेपर लिख दिया खुद कि अपनी टीम के साथ ऑन हाउ कोविड वाज अफेक्टिंग एजुकेशन, प्रोडक्टिविटी एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। बिकॉज आई अंडरस्टैंड राइट नाउ कि मेरा दिल जा रहा है टू मेक पीपल वर्क टुगेदर, कनेक्शन करवाने में है, बिल्ड करवाने के अंदर। बिकॉज आई मीन सोशल मीडिया एप्लीकेशन, now I'm focusing on how students were affected, how people were affected by technology, right? And that was my ambition. मुझे long term सच में आ रहा था, and it was pretty fun actually because मुझे एहसास हुआ कि I just like to stay busy. I made a lot of mistakes in 6th semester. मेरा CN का पहला assignment reject हो गया था, और मैं वो इसलिए reject हुए, बहुत over ambitious। अच्छा ये उसका ना करना ये था कि मुझे सिर्फ Python का proxy server बनाना था। Okay. मैंने किया, ये proxy server तो बन जाएगा, उसका UI बनाते हैं React। वो रिजेक्ट कर दिया। हाँ, टू कॉम्प्लेक्स, इतना ज़्यादा था नहीं, एक पाइथन फाइल लिखती थी, दैट्स जस्ट अबाउट। या हमारा भी यही प्रोजेक्ट था। हाँ, सिंपल कोड था वो, तो मुश्किल से लाइनें भी थोड़ी सी थी, 20-25 लाइन का कोड था मैक्सिमम, वो तो बन गया था। हाँ, but it was fun. I made mistakes. I realized those mistakes. इस पॉइंट ऑफ ड्यूरेशन में मैं डिफरेंट टीचर से मिलना शुरू हुआ बिकॉज FFP करना है, ये सब चीज़ें करनी है। एंड आई मेड सो मच भंड ट्राइंग टू फाइंड अ सुपरवाइजर। मैंने बहुत भंड की लिटरली। आई वोंट नेम अ टीचर, बट मैं हसन ताशिक सोच रहे थे किसको सुपरवाइजर लेंगे, किसको लेंगे, उसको लेंगे, क्योंकि हमारा अच्छा हसन इज़ डेवलपमेंट ओरिएंटेड, ताशिक डेवऑप्स ओरिएंटेड, मैं सॉफ्टवेयर और एक इंजीनियरिंग और एक ओरिएंटेड हूँ। ओके। तो वी वांट टू फाइंड समवन हु सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ओरिएंटेड, और हम रिसर्च वाले भी हैं नहीं। मैं इन रिसर्च अभी इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ, तो मुझे अभी रिसर्च प्रॉपर नहीं करनी थी। मैं ऑब्वियसली कर सकता हूँ, बट मेरा मोटिवेशन उस तक जाने रही थी। Because मेरा था कि यार if I make a proper product that may help me to land a proper job and move on from there and figure things out from there. तो मैंने सोचा उस वक्त रिसर्च नहीं करने का, chose a product based FFP to do with my teammates. So first semester हमने साथ प्रोजेक्ट किया, हमने FFP करना सोच के साथ करने का। That's how it happened. फिर one time we had someone in mind, I won't name a teacher. Sure. And this is a very respectable high, मतलब काफ़ी यूनिवर्सिटी में बहुत साल दिए। And I am the talking person in the group के कभी भी फिक्र सुपरवाइजर से बात करनी है या कुछ करना है, I start off and talk with that. I go into the office, I say, we want XYZ, this is another professor who's really good, but junior than this person, to be the supervisor, and you can be the co-supervisor. Okay. और उनकी अट गई थी। We went out immediately. Like मैं क्या सोच के कहा, मेरा माइंड ब्लैंक हो गया था। I don't know what I said. We never met. उससे बात नहीं की फर्दर हमने उस बारे में। यार do tell me the name after the recording and sure fair. So eventually we started with Dr. Rafi because Dr. Rafi can session लिया था उस वक्त in 6th semester about how much उन्होंने previously software engineering products, and so and Dr. Rafi has been in FAST for a very long period of time. 1990s से हैं, so he's been here for a very long period of time. So उन्होंने software engineering project भी करवाए हुए हैं, उनका research oriented NLP और artificial intelligence है, and all those kind of things, information retrieval है। and हमने पहले जाके किया ये। अच्छा, the way we did it was very interesting. हमने कभी भी so the first हम 3-4 दफ़ा गए, हमने कभी FFP का वर्ड मेंशन ही नहीं किया। Okay. हमने मेंशन किया सर आपसे हमने ये चीज़ बनाई थी फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, हम आपसे ओपिनियन लेना चाहते हैं कि इसको FFP में कन्वर्ट करना चाहते तो क्या करें। So we never asked him to be our supervisor. Okay. One day, and then one day we go in, and I said, "Sir, आ जाऊँ?" Sir ने कहा, "हाँ, supervision के लिए आ रहे हो ना?" सही है। I remember still. तो that's what happened. तो 6th semester end हुआ, हम requirement काफ़ी decide करने की कोशिश करें क्या बनाएं, because कभी ये कभी वो ambitions बहुत ज़्यादा हैं। हम तीनों बहुत like overly ambitious हैं, ये भी करना है वो भी करना है। हमने सीनियर से अलग से मीटिंग की, यार FFP में कितना ज़्यादा काम लें, कितना कम काम लें। We had a whole discussion internally. वो परेशानी भी थी कि ज़्यादा काम ले लिया तो क्या होगा, कम काम ले लिया तो क्या होगा। हाँ, हमारा था कि नहीं, अच्छे नंबर से गुजारना है, ग्रेजुएशन प्रॉपर करनी है, अच्छी चीज़ बनानी है। स्ट्रेस बहुत था उस पॉइंट पे। तो खैर ये पूरा हुआ, कम्स अराउंड 6th semester ख़त्म हुआ। आई स्टार्ट माई इंटर्नशिप के अंदर थैंकफुली अच्छा आई वाज बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है पॉड का, जिसमें काफ़ी लोग एक साथ होते हैं पॉड के अंदर, बट दो पीपल आर वर्किंग विद डिफरेंट टीम्स।
फॉर एग्जांपल 10 मिनट लोगों का पॉड है और उसमें से हम में से हर कोई शख्स ना शाम में आके अपनी अपडेट्स देता है कि किसने क्या किया, किसने क्या किया, किसने क्या किया. And every person in the pod is working with 2 or 3 other persons from the same pod. तो I got into a kind of pod और उसके अंदर हुआ ये कि प्रोजेक्ट साइन करने होते हैं कि कौन किस टीम में जाएगा, बिकॉज एमएनएच इज़ लाइक कि it has different projects from different places and different companies that do open source work, या गूगल से है या फेसबुक से है या किधर और से भी है. So luckily in that I got to work on a project. So it's called Mapillary, and Mapillary का काम ये था कि you use Google Maps. I use Google Maps. How do you think the data is stored? SQL तो नहीं होता है. No SQL होगा perhaps. And Mapillary करता है ये, for example, you can take a picture of the whole Karachi, upload it there, and people around the world can see it for free. Like it will take the images you inserted, and it will find out कि वो images किधर से आई हैं, and it will try to paint a 3D view of the entire world given the images and data it has. सबसे ज़्यादा डेटा कराची का शायद फैसल पे. ओके. ज़्यादा बाकी कराची का है ही नहीं. क्योंकि मुझे एहसास हुआ जैसे होल कम्युनिटी ऑफ पीपल जो कि स्वीडन के अंदर, यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर बस अपने शहर में घूमते रहते हैं, तस्वीर लेते रहते हैं और अपलोड करते रहते हैं. उनको टूरिज्म का शौक है तो वो फ्री में अपलोड करते हैं. दे पीपल हु आर एंग्री कि हमें और ईजी नहीं तरीका मिल रहा अपलोड करने का. एंड दैट वाज न्यू फॉर मी कि यार ये सब लोग टेक्नोलॉजी को ऐसे यूज़ करते हैं. मैं तो सोचती भी नहीं कराची के अंदर ऐसे टेक्नोलॉजी यूज़ होगी वगैरह वगैरह. सो दिस कंपनी 2017 it got bought out by Meta, previously Facebook. बिकॉज फेसबुक का पूरा वीआर पे जाने तो मैपलरी से उन्होंने करवाया ये कि डेटा सारी इमेजेस के लो, उसको 3D मैप जनरेशन करवाओ एंड डू ऑल काइंड ऑफ स्टफ. आपको हर जगह नज़र आएगा कि अच्छा ये 3D व्यू है ऑफ दिस बिल्डिंग एंड दैट्स जनरेटेड फ्रॉम 2D इमेजेस. आई डिडंट इवन नो दैट वाज पॉसिबल, बट दैट्स जस्ट पॉसिबल. ये पूरी फील्ड है कंप्यूटर विजन की, कंप्यूटर ग्राफिक्स की. आई डिडंट इवन नो अबाउट इट. So I got into that, and turns out Mapillary कर ये रहा था कि was trying to update its API. Basically data जैसे से मैनेज हो GIS के अंदर वो JSON फॉर्मेट में होता है. So no SQL, right? और specific फॉर्मेट होता है JSON का. सिर्फ JSON नहीं, there's a specific फॉर्मेट के यूनिवर्सिटी स्टैंडर्ड है कि ये JSON ऐसे रीड होगा हर जगह पे. Okay. You have to follow the standard every single where. And हुआ ये कि they asked me to write a library जिसमें वो नए API के लिए simple, for example, you want to get some data from the API, you have to write 4 to 5 lines of code to get simple thing out of that. Yeah. That's complex because काफ़ी researchers हैं, academics हैं जो कि इनके product use करते हैं and they don't know a lot of coding, that they're not very technically hard about it. But they know a bit of coding on how to call Python method वगैरह पे. So they asked me to make a library, and I was working with someone जो कि my lead was in US जो कि फिर shift हो गया Switzerland. He's in Zurich right now, and the other person was from Egypt, Cairo. So that was a new experience because first internship and working with an international team, that was really fun. खैर डिलीवर करवा दिया. The whole thing was working well. डॉक्यूमेंटेशन लिखनी थी, डॉक्यूमेंटेशन ली थी, टेस्ट केसेस लिखते हैं, टेस्ट केसेस भी हो गया, स्ट्रक्चर भी बन गया. They're happy कि we went over जितना ज़्यादा इनिशियल डिसाइड किया तो उससे ज़्यादा हमने करके डिलीवर करवाया. That happened. That project now has 12,000 downloads से ज़्यादा. Okay. एंड एक दफ़ा हुआ भी ये था कि आप रिसर्चर फ्रॉम आयरलैंड रीच्ड आउट टू मी कि यार आई वाज लूजिंग यू. एंड अच्छा आज भी इशू आया मुझे, मैं फ़ोन चेक कर रहा था, किसी ने पॉइंट आउट किया कि दिस लाइब्रेरी शुड हैव दिस या ऐसा सब होना चाहिए. पर्सन फ्रॉम आयरलैंड वंस रीच्ड आउट टू मी कि दे वर PhD स्टूडेंट जो कि कंप्यूटर करना चाह रही थी यूजिंग GIS, और वो हमारी लाइब्रेरी यूज़ कर रही थी और उनको मैटर समझ में नहीं आ रहे थे. तो दे रीच्ड आउट, अच्छा पैरामीटर ऐसे यूज़ करना है, ऐसे यूज़ करना है. लाइक oh okay. I was not expecting people to use that much. मतलब पहले तो प्रोजेक्ट बना के डिलीवर करवाए थे सेमेस्टर्स के लिए. इतना ज़्यादा सोचा नहीं था मैंने पहले about that, right? सही. That was fun. 6 semester ends, FYP starts, and FYP is hectic. Yeah, it is. Long story short, जितना ज़्यादा हमने उम्मीद की थी टीम के अंदर डिलीवर करवाने की, उससे नीचे बाहर गया थोड़ा सा. About 70-80% we were there, but जितना हमने सोचा था eventually start के अंदर 100% हम नहीं कर पाए. There was a lot of work. हमने 3-4 डेटाबेसेस यूज़ किए थे, एक बैकएंड था, 2 फ्रंट एंड थे. डेटा और डॉकर की चीज़ें अलग लगी हुई थी, डॉकर, टेराफॉर्म, Kubernetes, Tashik, with this magic of DevOps and all of that. It was fun, but it was stressful. I graduated with burnout. I decided after graduation, I'm not going to do anything on the weekends.
मैं सिर्फ ऑफिस का काम करूँगा, कोडिंग नहीं करूँगा, कुछ भी नहीं करने वाला, Okay. वीकेंड्स पे कुछ नहीं करने वाला मैं. Literally, I don't want to even see the laptop after work. I just don't. Okay. That's how I spend the first 3 to 4 months after graduation. Just chill and relax and just reflect back 4 साल कैसे गुजरे वगैरह वगैरह, you know, just enjoy life in general. Just listen to a lot of music. ज़्यादा सोना शुरू किया मैंने finally. Class था. अच्छा वो होता है कि अच्छा Esther had this thing कि first of all probation पे था मैं, right? Probation में सुबह आना जाना. अच्छा यूनिवर्सिटी लाइफ में था कि अच्छा आप सुबह, मैं आता हूँ नॉर्थ कराची से, विश में 1 घंटा लगता है आने जाने, सॉरी 1 घंटा आना 1 घंटा घंटा जाना. जाना यार. सुबह उठता था मैं 5:30 बजे, तैयार होते होते पॉइंट आती थी 6:30 बजे, पहुँचता था 7:45 बजे, घर वापस पहुँचता था 5:15 बजे. तो जब मुझे आज़ादी मिली ऑफिस टाइम में कि हाँ तुम 10-11 बजे 12 बजे आ जाओ, कोई मसला नहीं, बस आवर पूरे कर लेना, बोला रियली. Yeah, that's a good reaction. Mine too. Really? I started waking up at like 9-10 आराम से खा नाश्ता करके Yeah. फिर उठ के and ऑफिस जाना. That felt relaxing Yeah. after so long. नींद पूरी हो रही है, दिमाग finally clear feel कर रहा है, stress कम जा रहा है. That was really great in the beginning because I really needed that. And साथ में मुझे जो है थोड़ा बहुत future के लिए सोचना था कि you know first of all there's obviously when you graduate you have an expectation कि आप किस पे काम कर रहे होगे, as in कि आपने कैरियर से क्या चाहते हो. क्या आप चाहते हो कि you work on the best tech and the best technology and so on वगैरह वगैरह. And the truth be told, you're never going to get what you want in a shitty at least right off the bat. And the reason for that is because of market conditions, because of the economy, because of job situations, because of a lot of factors जो कि आपके हाथ से बाहर हैं. और मुझे जब Australia join किया था, first of all, I felt a lot like that because sometimes I felt कि यार I know way more than this. I you know ये task कर सकता हूँ, but you know I can do more. वही था यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर, ये तो कर सकता हूँ, मैं ज़्यादा भी कर सकता हूँ if you ask me for it. And करते करते the product that जो कि एटलीस्ट मैं डिलीवर करवा के जा रहा हूँ एंड ऑल ऑफ दैट वो चीज़ थी, उस वक्त प्रोडक्ट काइंड ऑफ रिलीज पे जा रही थी बट नॉट रियली रिलीज पे जा रही थी. इट्स अ लॉन्ग स्टोरी बट द शॉर्ट थिंग इज़ के इट चेंज हैंड्स एंड हैंड ऑफ मैनेजर्स, और फिर प्रोडक्ट की डायरेक्शन 2-3 दफ़ा चेंज हुई. फाइनली जो प्रोडक्ट अब डिसीजन डायरेक्शन बना है, finally I hope at least after I'm like this is my last day as sure I really came and I'm joining it as security next Monday, security as a software engineer. And the thing that I realized from that was that first of all I should stop blaming myself for the circumstances that I have faced because हर चीज़ मेरे हाथ में नहीं है, और बिला वजह अपने आप को बुरा फील करवाने से कुछ नहीं होने वाला, लिटरली कुछ नहीं होने वाला. The thing I need to do first is that कि जो मैं कर सकता हूँ अपनी कैपेसिटी के अंदर, I should do that. I should be a good software engineer as much as I can be. I should be as a reliable member as I can be. मतलब लोग मुझ पर rely करना सीखें. I should be someone जो कि communication बहुत ज़्यादा करते हैं, that people look up to in the office. It happens so many times that अभी last Wednesday की बात है. So what happened was that कि this person from another team was working on a ticket that was from another 3 teams हैं, मेरी टीम अलग है, ये बंदा अलग है, and a person that was on a sick leave is from another team. Okay. And this person from a second team gets assigned a customer ticket that belongs to the third person's area. And मुझे किसी का एरिया नहीं पता Okay. जो कि ये है, but that person ना ही उसकी टीम सेम है हमारी. This person is a batchmate of mine. And he just texted me, hey, are you available? I said, हाँ, I'm available. Do you कुछ मसला है? हाँ, वैसे कोई इशू था, सोचा तुम्हें शायद पता हो कैसे, like how to solve this. I go on a call. I think I thought it was about 15-20 minutes. मैं लगा मैं कोई बड़ा इशू थोड़ी होगा, 15-20 मिनट होके कॉल बंद करके I have better work to do. It turns into 3-hour call. But fix the bug in an area जिस पर मैंने कभी पहले कभी काम नहीं किया. Okay. Try testing. And I think for me that's like people value me even though मैं डायरेक्ट उनके साथ काम नहीं करता हूँ, but they know me for who I am and my values, and that people can trust me and people can be open about sharing the problems with me. And again, the point is that what's success for you and what's success for me.
do I want to go through life just being rich, or do I want to leave a legacy? And legacy in that came while I was here, while I was with you, and while I was able to, I contributed something back to you. या फिर I give something to help you and solve your problems, right? And that's what I try to do. And मेरी चीज़ मैंने last year try करना सीखी कि यार I cannot control everything. I feel anger, yes. I feel being upset, yes. I feel कभी कभार जो मुझे चाहिए वो मुझे नहीं मिल रहा है exactly, बिल्कुल. But जब तक मैं सिचुएशन में हूँ, मैं सिचुएशन में हूँ. Yeah. I'm not being specific about being a terrorist. I'm talking about every company out there. Yeah. You're going to have to face circumstances. फिर उसके बाद हुआ ये कि things happen at a company. My brother lives in Riyadh, and I go and he basically invites me if I want to come over for a few months. I get an approval to work from home entirely from Riyadh, and that's what I do. I spent 5 months there, and I get to meet a lot of Ari people. I go out. Allah ka shukr hai, I was able to do the Umrah and all of that kind of stuff. And I really appreciate जब आप बाहर दुनिया निकलते हो अपने छोटे कराची छोटा लगता है. ट्रैफिक ज़्यादा है, शहर छोटा. नहीं, दुनिया के हिसाब से देखें तो छोटा सा ही शहर है. हाँ, छोटा. लाइक बिकॉज मैं जब बाहर गया और मैं जब लोगों से मिलना शुरू किया, एंड मुझे एहसास हुआ कि फर्स्ट ऑफ ऑल नॉट एवरीवन हैज़ द प्रॉब्लम्स दैट वी डू हियर. पीपल डोंट वरी अबाउट बीइंग स्टक इन ट्रैफिक. हाँ, कभी कभार करते हैं, अगर आप पेक टाइम पे निकल रहे हैं तो वो आपकी गलती है, बट यू कैन चूज नॉट टू, यू नो. या फिर यू कैन चूज टू वॉक हाई करने. मैं कई बार आके 10 बजे वॉक पे निकलता था बिकॉज कराची में को फ्रीडम नहीं थी. मैं like that's the biggest issue of us living in Karachi is that we can't go out for a walk. Like we really can't. क्योंकि डर लगता है ना भाई, लुट जाएंगे. मतलब I've been to like more like cities in Pakistan. Like I feel कि मैं बहुत ज़्यादा शहरों में घूम चुका हूँ. पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा की साइड पे. Like आपका जब मूड हो आप बाहर जा सकते हो, कराची में नहीं जा सकते. एंड दैट रिलीव्स योर मेंटल स्टेट. आप दूसरे शहरों में, यहाँ पे बाहर आप निकल ही नहीं सकते, तो इस वजह से पीपल फील ट्रैप्ड मोर, आई फील. यार सो अबाउट दैट इज दैट कि जब आपके पास फ्रीडम नहीं होती टू मूव अराउंड एंड डू ऑल द काइंड ऑफ स्टफ, यू फील स्टक, यू फील फ्रस्ट्रेटेड. मुझे एहसास हुआ बाहर रहकर कि इट्स नॉट अबाउट कि यार हमारा मुल्क गरीब है, उनका मुल्क अमीर है. इट्स नॉट अबाउट कि यार उनके पास ज़्यादा अच्छी गाड़ियाँ, हमारे पास कम अच्छी गाड़ियाँ हैं. उनके पास बड़ी वीगो है, छोटी वीगो है. I'm not saying okay, but the point is that I've seen poor people in Riyadh. Not everyone is rich. Yeah, I've seen very rich in Riyadh, and that's perfectly fine. But the point is that कि जब आपके पास सोसाइटी में you have a constant fear, frustration होती है, वो चीज़ें होती हैं, that's the point आपको फील होना शुरू हो जाता है कि यार things are just not going to go anywhere unless कोर मसले सॉल्व नहीं होंगे, चीज़ें आगे मूव ऑन नहीं करेंगी. So when I came to Riyadh, I had the impression, okay, I have a good GPA. I came from a good university in Karachi. I have good potential. I'm a software engineer that has potential. And I decided to go and join. Azhar bhai pushed me that you should explore more on the people's side in Riyadh and talk to them about it. So that's what I did. I decided to go on events. There's an application called Meetup. Usme hote hai कि hey, do you want to go for cycling? Do you want to go for a coffee? Do you want to go? And the like-minded people say yes or no. And yeah. Hey, do you want to go for sand dune होती ना, उसमें एक कुछ होता है, you can sit in it and it will go up and down, जैसे camel riding की तरह थोड़ा सा होता है. लोग वीकेंड्स पे करते हैं, शौक है. रियाद में तो देयर इज अ प्रॉपर डेजर्ट टू, राइट? करीब में आधे घंटे ड्राइव पे है. साइकिलिंग करने जाने आधे घंटे ड्राइव पे है. आपको टेबल टेनिस खेलना है, कोर्ट बने हुए आपस में, ओपन कोर्ट्स. नाइस, नो वरीज. बट जब मैं अरबियों से मिला, मुझे एहसास हुआ अबाउट द कल्चर. सो दे डिडंट आस्क मी, they didn't ask me where I'm from. They obviously, because I have an accent. मैं ऐसा कराची में बहुत दफ़ा हो चुका है. People ask me कि मैं बाहर मुल्क से हूँ. I said no, I'm from Karachi. Okay. And that happened in Riyadh as well. And they asked me, अच्छा, what do you do? मैं एक दफ़ा नमाज़ पढ़ने जा रहा था करीब मस्जिद, मैं वॉक करने जा रहा था, and Arvi said salam to me out of nowhere. Karachi we don't say salam to strangers. To random people, yeah. We don't. Yeah, we don't. This person, Maghrib ka waqt, this person was going for prayer. I was also going for prayer by walking. This person had a car and he said, "Okay, अच्छा, are you going for prayer?" I said, "Yeah, I'm going to prayer."
एंड उससे बोला हाँ हाँ मैं भी जा रहा हूँ, लेट्स गो टुगेदर, आई वी कैन मतलब ड्राइव करके वो हम साथ चल लेंगे वापस में. दिस पर्सन गोज टू डिफरेंट मस्जिद विच इज़ अ बिट फार फ्रॉम माई होम बट रीजनेबल डिस्टेंस पे, और वापस ड्रॉप भी कर दिया उन्होंने मुझे. एंड होल द वे हम बातें कर रहे हैं एंड सजेस्टिंग क्या करना, आई टेल हिम आई एम इन रियाद, ये सब कर रहा हूँ. एंड ही सजेस्ट टू मी कि यार first of all, he is amazed that I had good English. Okay. He was not expecting that because he जिस तरह से बाहर रेपुटेशन बन चुकी है पाकिस्तानियों के लिहाज से, it's different in the sense कि he said कि यार Makkah Medina, if you go there, you see sometimes Pakistani that are rude, sometimes there are people who are begging, stuff like that, and that kind of felt bad. I don't want that impression of my. I didn't see anyone from any other nation in Makkah Medina that was begging except some continental people, Pakistani and Indian, and that felt very weird. Why do we have this culture? Apart from that, I said to him, he asked me, what do you do? I said, I'm a software engineer. Mashallah, mashallah. Software engineer. You are very successful. I said, thank you so much. And हम पूरे रास्ते बात कर रहे थे about the culture in Riyadh and Saudi Arabia. वो मशवरा देते अच्छा, if you in Riyadh, go here, it's pretty good, बहुत मज़ा आएगा, ये हिस्ट्री की जगह है, खाने की जगह, यहाँ पे जाना, एंड खाने अरबी के बहुत ज़्यादा खाने होते हैं, और यहाँ ट्राई करना, ये बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है. अरबी आर वेरी ओपन पीपल, दैट एटलीस्ट मेरा इंप्रेशन था यार जितने बात की मैंने उन लोगों के साथ. And when I went to different coffee meetups वगैरह पे, they didn't ask me where I was from. They didn't ask me कि यार specifically कि यार are you non-Arabi, are you Arabi? They asked me, hey, have you worked on this problem before? Have you solved this thing? And I said, no, specifically I have not. They didn't ask me कि यार for example हम बोलते हैं कि यार software engineer हो, right? They ask कि यार क्या आपने ये problem solve की है? They don't ask for roles, they ask problems, and that was a big difference to me. They were asking कि आपने for example image recognition पे ये problem solve की है? And I said no, not really, but like have you made an application that does this? And I said कि नहीं मैं तो नहीं बनाई, but I can make it if you want to. That's of interest to me. अगर मैं अच्छा काम लगा तो that's something जो कि मैं free time में कर सकता हूँ. But like they very specific about कि क्या काम है, क्या काम करने, कैसे वैल्यू बनानी अपनी, how do you want to be known for that. And उससे एहसास हुआ ऐसा कि when you go in a place like that, आपकी एक image होती है, एक recognition होती है that people know you for, and you have to think about what people want to know you for. It's just not enough to have a title, कि अच्छा मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ. No, it's about कि यार wherever you go, you have to learn to build a trust, and you have to make people learn to come to you, to make yourself as approachable as possible, ताकि लोग आपके पास आके सवाल पूछें, at least आपसे बात करना चाहें. That's the fact. और जब मैं इन लोगों के साथ था, चाहे different मुझे अरबी नहीं आती, I don't know Arabic, but I just went and sat in those circles जिसमें अरबी लोग बैठे होते हैं, and अरबी लोग खुद पूछ रहे हैं अच्छा do you speak Arabic? They noticed me, I was just listening and nodding. Anything. And I said, no, Arabic nahi, but I'm just interested in listening. And उन्होंने खुद मुझसे बात करना शुरू की. And that was respect मिल रही है, लोग ऐसे पूछ रहे हैं. And again, उससे एक वही बात आती है कि how much do you take, how much do you give? Give करने में, किसी से सलाम दुआ करने में, किसी का हाल पूछने में, किसी से हाल पिलाने में आपका कुछ नहीं जा रहा है. This is free, right? But when you start to think कि यार इन लोगों ने मेरे लिए ये नहीं किया था, उन्होंने मेरे लिए ये नहीं किया था, at some point you have to decide on how the battles you want to fight, और आप हर बैटल नहीं जीत सकते. Yeah, exactly. आप ये नहीं कह सकते कि उस दिन लास्ट ईयर मेरे साथ ये नहीं किया था जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, तो I'm still going to hold that in my heart. It's not that's not how professional relationships are gonna work. That's not how personal relationships are gonna work. You have to learn to forgive and forget and move on and change and just be the best version you can be. Yeah. खैर रियाद में मुझे एहसास ही हुआ कि I don't want to live in Karachi. Okay. Reasonable expectation. Yeah, but still could hurt the sentiments of a lot of the people. I'm sorry. But I also don't want to live in Riyadh in the long term. And the reason is that कि explore करने वाले. No, it's not about exploration. It's about कि
again, what do I want to be known for in my life? Do I want to be known for कि यार रियाद में रह के, for example, अगर if I decide to make a career over there in the future, for example, that's my goal. मैं कर तो सकता हूँ, but क्या मैं करना चाहिए? क्या मेरी लेगेसी ये होगी कि मैं 8-10 साल मैं इधर उधर शिफ्ट करता रहूँ, कंपनी टू कंपनी, फिर इधर उधर जाता रहूँ? Is that my legacy? Or is my legacy different? Legacy से मतलब ये कि your impact where you will like live, जो यूनिवर्सिटी वाली बात थी. बिकॉज प्रोफेशनल लाइफ में सो फार मेरा ये था कि यार जस्ट नीड टू गेट द जॉब डन, काम करना है, इशू आ रहे हैं, बग आ रहे हैं, टास्क फाइल हो रहे हैं, फीचर बनानी, ये सब करना है. उस वक्त मैं थोड़ा सा इससे डिस्ट्रैक्ट हो गया था कि व्हाट आई रियली वांट टू लुक फॉर लाइक इन माई लाइफ, राइट. एंड आई स्टार्टेड टू रियलाइज आहिस्ता आहिस्ता कि यार even if I spend 10 years, 15 years, 20 years making good money as a software engineer, is that what I want? Like, हाँ, सैफ अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, ओके, गुड फॉर हिम, अब क्या कर सकते हैं उस बारे में. बट लाइक देयर इज अ थिंग कि मुझे एहसास हुआ आहिस्ता आहिस्ता कि यार अगेन इफ आई वांट टू लीव एन इम्पैक्ट आई नीड टू डू समथिंग दैट गोज बियॉन्ड मी. Have you done that already? नो, आई हैव नॉट. एंड मैं उसी तलाश में हूँ इन द सेंस दैट मुझे एहसास हुआ कि अगेन माई फाइनल ईयर प्रोजेक्ट वाज ऑन एजुकेशन, मेरा TW का प्रोजेक्ट वाज ऑन एजुकेशन. Okay. एंड मुझे ऐसे ऐसे एहसास हुआ कि यार आई फील द इश्यूज इन दिस वर्ल्ड. मैं बहुत बड़ा सोचता हूँ, मैं अच्छी बात है, like अच्छी बात है. एंड मैं सोचता हूँ कि यार द इश्यूज वी हैव एज अ नेशन, एज अ कंट्री, एज अ पीपल, सोसाइटी, एज अ वर्ल्ड इज दैट कि we just not educated about how the other cultures are. We're not educated about how to learn in the 21st century के तौर पे. आपकी एजुकेशन सिस्टम वही है जो कि 100 साल पहले वाली थी. Nothing's changed that much. And that is kind of bothering because is that how we want to think about life, about information, about technology के लिहाज से? Is this really compatible जहाँ पे हम फ्यूचर में जाना चाहते हैं एज ए ह्यूमैनिटी के तौर पे? एंड मुझे एहसास हुआ, सो फर्स्ट थिंग दैट आई डिड आफ्टर कमिंग बैक टू कराची वाज दैट कि मैं जब याद मुझे एहसास हुआ कि यार मेरे पास घर में बहुत सारी यूनिवर्सिटी की बुक्स, मैं इतना नर्ड था कि मैं सेमेस्टर कोर्सेज के बुक्स हार्ड कॉपी घर में मंगवाता. यार ये इसमें नर्ड नहीं है, मैं भी मंगवाता था. पढ़ी कितनी ये मैं गारंटी नहीं दूंगा, लेकिन मैं मंगवाता था क्योंकि लाइक अच्छा लगता है बुक पढ़ना यार. तो आई वोंट जज यू ऑन दैट. ओके, आई वुडंट जज यू ऑन एनीथिंग, बट लेट मी मेक दैट क्लियर. ओके. तो फिर मैं आया एंड मुझे पूरे शेल्फ में बस कुछ पढ़ना भी बुक्स थी, अब बुक्स थी कुछ सेमेस्टर, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर मैंने अपने लिए ली थी. और मैंने पहले काम ये किया कि आई ईमेल्ड द फास्ट लाइब्रेरी कि मुझे बुक डोनेट करनी है, कैसे डोनेट करूँ. डिसाइड के बस आ जाओ बुक लेकर. एवरीबडी फाइन इनफ. So you donated the books to the library? I donated the books to the library, but उसमें चीज़ एहसास हुई, आई emailed the library, मतलब कि यार how the process works. एंड लाइब्रेरी के नीचे एक नीचे टेक्स्ट लिखा होता है ना, आफ्टर रिगार्ड्स एंड एवरीथिंग. उसमें लिखा होता है कि हमारे पास वी हैव सो मैनी पियर्सन पेपर्स हैं, ये सब पेपर्स हैं, वो सब पेपर्स हैं, वो सब पेपर्स हैं, ये रिसर्च का मटेरियल अवेलेबल है. आई एम थिंकिंग टू माई सेल्फ, ये सब रिसर्च का मटेरियल तो है, पर इंडस्ट्री में हमें पता ही नहीं है कि ये चीज़ें हम कर भी सकते हैं या इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या इनका क्या इम्पैक्ट बन सकता है अगर सोसाइटी के तौर पे हम उसको इस्तेमाल करना सीखें. एंड आई रियलाइज आहिस्ता आहिस्ता कि हमारे पास जो ऐसा ह्यूमैनिटी के तौर पे इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के तरीके हैं, हम सिखाने के तरीके हैं, इट्स वेरी लैक क्लस्टर. आपको चीज़ सीखनी है, क्या करोगे आप? विकिपीडिया पे जाओगे, इधर उधर ट्यूटोरियल ढूंढते रहोगे, कुछ ना कुछ तो बेहतर सोल्यूशन होना चाहिए ना. मुझे स्कूल लाइफ में बहुत शौक था हिस्ट्री का, स्टफ लाइक दैट. आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ, मतलब नॉर्थ अफ्रीका से लेके गल्फ तक, मिडल ईस्ट तक, सब कॉन्टिनेंट के, चाइना के, यूरोप के, अमेरिकन के, साउथ अमेरिका की हिस्ट्री. आई लव ऑल ऑफ इट बिकॉज मुझे एहसास होता है कि कुछ प्रॉब्लम सोसाइटी शेयर करती है हर जगह. एंड मुझे उस वक्त कोई टीचर था नहीं स्कूल में जो कि हिस्ट्री पढ़ाए, नहीं कोई हिस्ट्री का कोई किसी भी ईयर में कहीं पढ़ने का मौका मिला, कोई कोर्स वगैरह. कोर्स तो नहीं कहूँगा, क्या कहेंगे, उसको क्लास नहीं मिली कभी कोई. तो इफ़ अ पर्सन वांट्स टू लर्न समथिंग, दे डोंट हैव द कैपेसिटी टू डू इट, देन व्हाट डिड इट डू? मतलब वो कहाँ से सीखे, कहाँ से किताबें पढ़े, कहाँ मटेरियल एक्सेस करे. एंड आई फील दैट्स माई लॉन्गर गोल कि यार व्हाट आई वांट टू डू इज़ दैट कि आई वांट टू हेल्प इम्प्रूव द लिटरेसी ऑफ द वर्ल्ड. आई वांट टू मेक पीपल find it easier to learn about something easier. I want to do that, and that would be my legacy. You can become a CEO one day and you can have millions of dollars in your bank account, but इससे क्या फ़ायदा मिलेगा इंसान, because there are billionaires all around the world. अगर US का मैं कोट करूँ वेल्थ इनइक्वालिटी के लिहाज से,
मिडिल क्लास, सो अगर 100% फॉर एग्जाम्पल लाइक US इकोनॉमी, उसमें से जो टॉप 10% हैं उनके पास 50-60% पूरी वेल्थ है US की, या 20-30% मिडिल क्लास है, उसके नीचे ऑल ओवर क्लासेस हैं. एंड लाइक हाँ ठीक है, बट लाइक अगर एज ए ह्यूमैनिटी हमारे गोल्स थे जब हम बचपन में थे कि यार अगर सब खुश होते, सबके पास अच्छी लाइफ होती, हर कोई पढ़ा लिखा होता, थिंग्स वुड बी बेटर इन द वर्ल्ड, राइट? And that's what I thought about it. Yeah, that would be my legacy. I don't think people are going to remember billionaires. You can like a lot of billionaires. कुछ billionaires के नाम public भी नहीं होते. कि उन्होंने बहुत hard work किया, उन्होंने ये companies खोली वगैरह वगैरह की है. They did all of that kind of stuff. हाँ ठीक है, पैसा बहुत कमाया, ऐसी चीज़ें खोली, but like humanity context के अंदर were they important for the progression of society? Probably not. Probably not. No one will probably remember the name. दैट्स या तो वो चलेंगे, कोई ना कोई उनको प्रोसीड कर लेगा. हाँ, कोई और बिलियनियर आ जाएगा, क्या करने. जैसे कोई CEO है कंपनी का बहुत बड़ा, तो वो जब चला जाएगा दूसरा आ जाएगा, दूसरा बिलियनियर, दूसरा CEO आ जाएगा. So that's how I think about life ना, कि यार I believe and और जब मैं यूनिवर्सिटी जाता हूँ, जब स्टूडेंट से बात करता हूँ, I feel like कि यार why do you want to do something? कोई मकसद होना चाहिए. Do you want to do job because तुम्हें कोई जॉब से कोई तुम निकालना चाहो एज लर्निंग के तौर पे, क्या? And again, for example, as a मुबशर तुम्हारा कैरियर है, for example, let's say कि future growth के लिए you move to a place that's not US or Europe, or Australia, because everyone thinks Europe चलेगा तो भाई बेस्ट हो गया, जर्मनी चलेगा बेस्ट से आगे कुछ है ही नहीं. But मुझे एहसास हुआ ऐसा ज़िंदगी के अंदर कि आपको हर चीज़ फ़ौरन से नहीं मिलने वाली जो आप. एग्जैक्टली. कभी कभार आप इधर, कभी कभार उधर, और आप लाइफ में ऐसे मूव ऑन करते रहोगे. एंड दैट्स जस्ट हाउ लाइफ इज़. कभी आप स्टेप 100 तक, आपको पता नहीं स्टेप 100 भी है, बिकॉज स्टेप 100 मतलब का कहने का ये है कि आपको पता है कि स्टेप 100 मिल जाएगा, आपको नहीं पता आपको मिलने वाला भी है कि नहीं है. एग्जैक्टली. वो डिस्टिंक्शन आप नहीं कर पाते हो. आपको नहीं पता फ्यूचर में क्या रखा है, 1 साल बाद क्या रखा है, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद. मुझे नहीं पता अगले हफ्ते मेरे लिए क्या रखा हुआ है. कुछ होने वाला होगा तो हो जाएगा, अल्लाह मालिक है. अल्लाह बेहतर. नो, सही होगा. या एग्जैक्ट. बट यू हैव टू लर्न टू टेक स्टेप्स जो कि स्लोली आपको अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचाते हो. सो यू हैव टू डिसाइड कि एटलीस्ट स्टेप्स क्या होने चाहिए मेरे लिए. इफ़ यू डोंट नो कि स्टेप्स कहाँ तक पहुँचाएंगे. You and I can have similar goals, for example, in life, but our way of approaching those goals is going to be very entirely different based on circumstances, psychology, personality, life issues, किधर किसको क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है, and so on. So that's how I think about it. So when I'm talking to students, juniors के बारे में बात करता हूँ, I went to fast on Wednesday. और यार एक बहुत गलती कर दी थी मैंने. I saw a post of yours too on. Yeah, I did. So situation मैं बता रहा हूँ, but हुआ ये था. अच्छा, फनी स्टोरी ये कि Wednesday is a mandatory day on my office, and मैंने टीम को, अपनी टीम जो टीम का ग्रुप होता है on Teams, टीम का ग्रुप होता है Teams. I said, hey, I won't be available from this time to this time, and I said the word tomorrow / I don't know मेरे ज़हन में क्या चल रहा था, but मैंने बोला कि round braces 14 Feb. And he has done something very different. Okay. And I had to clarify कि मैं पता था क्या, मैंने ऐसे joke because 14 Feb. और उस वक्त हुआ ये कि अच्छा मैं लेट हो गया वापस यूनिवर्सिटी जाते आते. So everyone was laughing कि bro, like yeah. बहुत ज़्यादा नहीं हो गया. खैर, I met a student in university that day, and we were talking about game development specifically, again, that I mentioned previously. And the thing that I was mentioning over and over again was that, you can do that, you can do that, you can do that, but in a long term of things and a grand scheme of things, would these XYZ matter as much as your goal A and goal B? Would you regret, for example, not working on goal A and choosing goal X over goal A, right? Or are you trying to do something because someone else is doing something else and you feel left out, you feel compared कि यार वो बंदा कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ, and that makes you feel left out. As a human species, इंसान के तौर पे हमारी कैपेसिटी ये होती है कि we want to fit in everywhere we can. Yeah. And if we don't fit in, we feel left out by society. कि यार अगर मैं सबके साथ नहीं हूँ, ग्रुप में नहीं हूँ, then I would be alone, and being alone is very scary. I don't want to be alone, so बहुत से लोग मशवरा दे रहे हैं कि यार you can do this, you can do that. To me, that sounds like you're insecure about your own goals because, and this is what I said, the sentence I said was that, is it fair to yourself कि तुम्हारे goals नीचे हैं और किसी और के goals तुम्हारे goals के ऊपर आ रहे हैं?
Is that fair to yourself? And the obvious answer is no. No, yeah. So why do we have this society के तौर पे why do we have कि यार we don't understand कि हमारी अपनी strengths किधर हैं या फिर हम क्या चाहते हैं versus everyone else जो हमसे क्या चाहते हैं. And that causes a lot of issues because that means कि you don't really know आपका path क्या है and you feel like in the long term कि you're living someone else's life. किसी ने कहा है तो आपने कर लिया, अगर नहीं कहते तो नहीं करते. बात सही है. Like sorry, I had to cut you off. Sorry. Like it's been going great with you conversation, but can you expect कितना time हो गया होगा? Like तुक्का मारो. पता नहीं. It's been an hour and 10 minutes already. Yeah, and unfortunately we have a cap of 17 today, but like I'm really sorry for that. But like let's just wrap it up for like थोड़ा सा जल्दी and खैर अच्छा towards now मेरे future goals में कुछ यूँ हैं and this is what I would advise to juniors as well coming out of there is that कि find out what you enjoy and why you enjoy something rather than chasing whatever mainstream is. I would say find something that sets you apart. Again, individual होना सबसे हटके बनना is not a wrong thing to have. Collectively होना कोई बुरी बात नहीं है, but अगर आप ऐसे spot में हो जहाँ पे आप unsure हो because you feel कि कोई कुछ कह रहा है, वो senior है तो ये मशवरा दे दो, senior की advice मान लेता हूँ मैं, without ever putting it for process in and evaluating it critically कि यार ये चीज़ मेरे लिए सही भी है कि नहीं है. It's scary to make your own decisions and find your own path because you don't know how things will work out. You have the journey, I have the journey. Yeah, I don't know how things will work out, but let's see where things go and let's try to make it work out. You can have two approaches in life. Either you have a plan A followed by plan B, फिर plan C, you know कि चीज़ें एक साथ हो जाएंगी. यूनिवर्सिटी लाइफ में बहुत आसान था. आप सेमेस्टर स्टार्ट किया, पता कमिट 1 होने वाले, बट 2 भी होने वाले, फाइनल भी होने वाले, असाइनमेंट मिलने वाली है, आपको कोर्सेज के पता है कौन से कोर्सेज आपको लेने हैं, कौन से आपको नहीं पसंद है आपको. That's university. When you graduate, you have that exposure कि you can do anything you want. मास्टर्स करने मास्टर्स कर लो, मास्टर्स नहीं करना मास्टर्स नहीं करो. जॉब करनी, कहाँ जॉब करनी है? अगर इफ़ यू अप्लाई 3-4 जगह ऑफर लेटर आ गई, where would you want to go? We don't even expecting offer letter आए, मगर अगर आज आ गया तो किसी को मना करना पड़ेगा, रिजेक्शन करनी पड़ेगी. Yeah. And that feels bad. So what I would say is that कि choosing your own path, to wrap it up, is I would say difficult. It's hard. It takes a lot of time, and you will feel lost. And feeling lost is not wrong. It's actually part of the process. And you need to learn to accept your own emotions. मैं फील कर रहा हूँ वो गलत नहीं है. शायद किसी की ज़िंदगी का ये फेस बहुत अच्छा है, मगर मेरे लिए थोड़ा सा भी नहीं चल रहा. It's also fine. Some people have it figured out, some people don't have it figured out. And what I would say, if you really love and want to do, आपका कोई goal है and you want to do it in your life, doesn't matter कि 1 साल लगे या 2 साल लगे, 3 साल लगे, 4 साल लगे, whether not doing a goal at all. Like 4 साल बाद आप देखो आपने गोल पे काम कुछ किया नहीं है, would you regret it? You would regret it the first year कि यार मैंने 1 साल गुजार के कहीं और लगा दिए बट मैंने यहाँ पे नहीं लगाए. So think carefully about your time. Your journey is very important. You are unique, you are valuable, and you should find the best in yourself and be kind to yourself. गलतियाँ सब करते हैं, forgive yourself. तुम भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ. And that's what I would say. So, and at the end of the day, everything works out. and No need to be like. At the end of the day, no one has it figured out. We all trying to make sense for every single day. Yeah. सुबह उठने से रात तक हम सोच रहे होते हैं कुछ ना कुछ. Exactly. Khair, Saif, it was very good talking to you. Or I'll make sure that we do another one. I would love to come again. Yeah, I have to just sort a few things out and like we'll sit again, inshallah. We'll plan it out. I'll definitely contact you soon. Thank you for coming, Saif. All right. Thank you for talking with us. It was great to you. Khuda Hafiz. Bye. Take care.